आज प्रोफेसर आई बी सिंह साहब की पुण्यतिथि के ऊपर पहला मेमोरियल लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है। मैडम जनक सिंह जी, प्रोफेसर अजय मिश्रा, डॉक्टर ध्रुव सिंह जी, डॉक्टर राय, डॉक्टर सुधीर मेहरोत्रा, and others who are present in the hall, and again my classmate Dr. Dhiraj Banerjee, Avinash Chandra, and all others who are joining from through the communication media. डॉक्टर आई बी सिंह साहब के बारे में बहुत सी बातें आपको बताई गई। उनका व्यवहार, उनका तरीका, उनका बात करने का, उनकी साइंस, उसके सभी पर जिक्र हुआ। मेरा उनसे इतना ज़्यादा परिचय नहीं रहा। कारण क्या है कि एक उस वक्त जब होते थे ना क्लासेस, तो अलग अलग ग्रुप होते थे। एक ग्रुप होता था जिसके अंदर लोग बॉटनी, केमिस्ट्री और जियोलॉजी पढ़ते थे। एक ग्रुप होता था जो बॉटनी, केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी पढ़ता था, और एक ग्रुप होता था जियोलॉजी, ज़ूलॉजी और बॉटनी पढ़ता था। मतलब उस वक्त की जो बातें थी कि बस सबसे टॉप ग्रुप तो वही होता था जो जियोलॉजी भी पढ़ता था, केमिस्ट्री भी पढ़ता था और बॉटनी भी पढ़ता था, और सबसे लद्दड़ ग्रुप होता जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा। खैर मैं बीच वाले में। तो हम लोग दो सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ा करते थे, केमिस्ट्री भी और बॉटनी भी। तो उसी दरमियान में जो कुछ बातचीत हो जाती थी, फिर ये बीएससी ग्रुप जो था, उसके बाद में ये जियोलॉजी में एमएससी में चले गए और हम बायोकेमिस्ट्री में चले गए। उसके बाद ये जर्मनी, और हम फिर इन्होंने तो पीएचडी जर्मनी से करी, हमने यूएसए से करी। तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ नहीं रहा था। इसीलिए मिसेस सिंह से जब हमने कहा, उनके क्लासमेट थे, तो उन्होंने कहा तो पहली बार मिल गए। जाहिर है क्लासमेट होना और न मुलाकात हो तो इसका मतलब बहुत दूर वाला है। तो ये बात थी मैडम जिसमें हम लोग कभी नहीं मिले। उनकी खोज हमने कब करी? जब लखनऊ में हम इंसा चैप्टर के कन्वीनर हो गए। हमने भैया तुम तो कब फोन किया हमको, खैर याद तो थी सब। भैया तुम कभी आते नहीं मीटिंग में? बोले अच्छा अब आएंगे, अभी तक तो किसी ने बुलाया ही नहीं हमको। शायद एक आध मीटिंग हम लोग की हुई जिसमें इंजीनियर आए, बाकी फिर नहीं आए, क्योंकि वो अपने में ही बहुत बिजी रहते। जब प्रोफेसर ध्रुव सिंह जी ने मुझसे कहा कि भाई ये पहला लेक्चर होने जा रहा है, तो ना करने का तो सवाल ही नहीं था। मुझे भी उतना ही उत्साह था, पर हाँ ये जरूर हुआ कि बोलूंगा क्या। तो दो चीजें कॉमन थी, कोर्स, एक तो आईबी और दूसरा एनवायरनमेंट। क्योंकि मैंने देखा कि जो एनवायरनमेंट में, जियोलॉजी और एनवायरनमेंट में जो है, पूरी जियोलॉजी, एनवायरमेंटल जियोलॉजी भी होती है। और एनवायरमेंटल जियोलॉजी क्या होती है, मतलब कोर्स जियोलॉजिस्ट के सामने तो कहना बेकार है, मगर हम इन स्टूडेंट्स के लिए जो बायोकेमिस्ट्री खास तौर से हैं, तो उसमें यह है कि जो इसके द्वारा आप जो नॉलेज है जियोलॉजी की, यू कैन आइडेंटिफाई, remediate and hopefully prevent environmental problems, even disasters, which are again through the human activities. Human activities and environment are very, very closely related. Now everybody is aware about this greenhouses. हर आदमी बात करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, हर जगह पे इसकी चर्चा हो रही, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और इससे क्या है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने
COP26 यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, जो कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में वहाँ ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो उसमें उन्होंने एक मंत्र दिया, लाइफ, LIFE, दैट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल है वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है, तो हम कैसी लाइफ स्टाइल अपनाएं जिससे कि एनवायरनमेंट के ऊपर असर न हो। He said we should adopt the lifestyle to save environment, that is cutting down the green gas emissions. He said there should be a mass movement in India so that we can enable India to reach the net zero emissions by 2070. He called for mindful and deliberate consumption instead of unmindful and wasteful consumption of the resources of the environment. This prompted me to take up this topic for my talk, that is Life for Environment, to pay tributes to my classmate and friend, Professor Singh. The environment is being impacted by greenhouse gas emission from several sources, deforestation and other activities on Earth, and other factors like population, consumption patterns, and changing lifestyle due to increased income and related human activities. जो कंफर्ट में हम लोग रहने लगे, जो हमारी एक्टिविटीज लाइफ स्टाइल बदलने लगा, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. The impact of lifestyle on environment is enormous. The important component of the lifestyle is the food. आप लोग सब पार्टिकुलर फूड और एनवायरनमेंट में क्या लेना चाहते हैं? But it's the food that human and animal consume. The food drives agricultural practices, and the agricultural practices drive the various inputs which for agriculture is more demand on agriculture. More demand on agriculture, you need more water, you need more pesticides, you need more herbicides, and like that it goes on, and that is where it produces, and through that it produces the greenhouse gases. Recent studies, including one which is published very recently in the Nature Food, the journal, in September 2021, has stated that food system generates 35% of the total man-made greenhouses. 35%. And the meat and the poultry products, including growing crops to feed these livestock and for the grazing of the animals, contribute 57%. 35% का सिर्फ क्रॉप उन मवेशियों को खाने के लिए, उन लाइफ स्टाइल खाने के लिए, जिसका कि मीट प्रोडक्ट और पोल्ट्री हम लोग यूज करते हैं मीट, उसके प्रोडक्शन की वजह से 57% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज आर प्रोड्यूस्ड. The other 14% जो ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं, they come from agriculture and the products which are not used as the food or the feed, that is like cotton and the rubber. Cotton again, cotton का जो cotton seed oil है, जो बिनोला जो जानवरों को खिलाया था, again becomes a feed. So food से related इतना चीजें हैं. Now here the distinction is, if you look at the animal based and the plant based. The animal based food, beef is the largest contributor to the climate change. In fact, it generates 25% of the total food emissions, followed by cow milk and pork. Cow milk is about 88% emissions, and with the pork about 7%.
Now, raising plant-based food for human consumption contributes 29%. अगर आप plant-based food material produce कर रहे हैं, the emission is only 29% based on the greenhouses. Now, note the difference: 57 and 29%. Animal-based food material produce करने के लिए about 57% emissions are there. The rice is the largest among the food plant-based में rice में बहुत ज़्यादा greenhouse gas निकलती हैं, which is about 12%. And why they become? Because the farmers हैं rice को water में होता है, पूरी field को flood कर देते हैं, और flood करने से उनको क्या फायदा होता है? कोई दूसरी weed नहीं होती. But on the other hand, lot of bacteria grows there, and this bacteria gives rise to methane. And that is one of the biggest problems which comes with the methane. Related with the agriculture practices are the packaging, transport, storage of food and other agriculture products. These are all activities again contribute to the greenhouse gases. Now we have, if you look at the population wise, we are 17% of the world people, but yet we produce only 5% of the emissions. बड़ी अच्छी बात लग रही है, 70% आबादी वर्ल्ड की और 5% वर्ल्ड का कुछ गैस इमिशन. मगर ये भी सही है कि अगर इसका वे के हिसाब से निकालें तो 2.65 बिलियन टन्स of the greenhouse gases India produces, जो कि वर्ल्ड का 50 बिलियन के आसपास है. वर्ल्ड 50 बिलियन, हम कुल 22.65, मगर फिर भी हम थर्ड हैं प्रोडक्शन में वर्ल्ड के. तो क्या हुआ, और लोगों ने इसके लिए कुछ करा है, they have taken measures. So the adoption of lifestyle changes can help in reduction of the greenhouse gases simply by shifting from animal food, meat to plant-based food diets. If we shift that, we can make a shift in a big difference in the adopting the various. Similarly, we can do by adopting the various rice varieties, जिनके लिए बहुत पानी की जरूरत ना हो, ऐसी राइस varieties तो हम लोग ग्रो कर सकते हैं. रिसर्च हो रही है, people are coming up, but again change has to be made. दूसरा, burning of the paddy. लाइफस्टाइल की बात, अगर हम बदलाव लाएं तो उसके अंदर पैडी को न जलाएं, again it will reduce the emission. So we need to adopt nutrition sensitivity. हमारी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए? न्यूट्रिशन सेंसिटिविटी. और हमारा एग्रीकल्चर कैसा हो? न्यूट्रिशन सेंसिटिव हो. और दोनों कैसे हो? क्लाइमेट सेंसिटिव हो. एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन दोनों क्लाइमेट सेंसिटिव. So that's where we can help and do that. Now इतनी बात हम बार बार कर रहे हैं कि एनिमल फूड जो बेस्ड फूड मटेरियल उसको नहीं खाया जाए. Now shifting from animal based products to plant based diets have tremendously proven that tremendously help in the healthy advantage, health के लिए भी advantage. Very recently a study has been published which comes from that in the PLOS Medicine in 8th February of 2022, where they have talked about the diets. That by eating the good diet, plant-based diet, you can increase the lifespan. उन्होंने diet describe करी, Western diet, optimal diet, and of course the in-between diet. That is feasible diet. Because एकदम switch may not be possible. And what this shows that actually European diets क्या होती हैं? European diets are they are rich in meat and rich in processed food. हम लोग जैसे कहते हैं ना processed food नहीं खाना चाहिए. उनकी diet rich in processed food में, meat based, and the less on the vegetables and the fruits. So on the उसमें भी meat में भी red meat ज़्यादा होता है. See, optimal diet होनी चाहिए legumes, that is bean,
और lentils यानी दाल, wheat gram, oats, barley और brown rice. अगर हम लोगों के लिए देखा जाए तो मकई और ये जो हमारा ज्वार बाजरा, ये सब चीज़ें जो है, देयर इज अ गुड डाइट, ऑप्टिमल डाइट. A feasible diet उन्होंने बताया कि it may not be possible, so people may have 50-50 of that. They cut down the red meat, eat other meats, and that's how you can do it. अच्छा, ये स्टडी यूएस की है, बट इट इज फॉर फाउंड कि यूरोप और चाइना में भी सिमिलर लोगों ने बेनिफिट्स पाए. बेनिफिट क्या है? इफ यू शिफ्ट एट द एज ऑफ 20 from animal to the plant based, you can increase your lifespan by 10 years. If you shift at 40 years, you can increase your lifespan by 6 to 8 years. And even those who are in our age group, in 80s or nearing 80s, they can also have the benefit of 3 to 3.5 year lifespan increase by shifting your diet. So, the lifestyle changes not only helps in reducing the greenhouse gas emissions, but also give you good health and by keeping you healthy and a larger lifespan. So I think I will stop here and once again thank for giving me an opportunity to be with you on this very, very important auspicious moment for the Department of Geology. And once again, thank Guru Singh ji especially for inviting me. Thank you very much.